संवेदनशील है, वहां के मुख्यमंत्री के पास सुरक्षा होनी चाहिए। परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये इस बात में जो कहना चाहते हैं कि इन्होंने कितना बदलाव किया है मान्यवर, इसलिए कभी कभी इनके 10 वर्ष के अंदर चरित्र में इतना बदलाव, ये कहते सबसे जल्दी सत्ता में आए। महोदय मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ हम 1951 में बने, हमने 72 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 72 दिन में समझौता किया, तब ये सत्ता में आए। और इसलिए आज दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। और शायद दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि मैं समझता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं संक्षेप में, मेरे विचार से इनको अध्यादेश पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए और दिल्ली का अधिनियम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने को कहते हैं सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो अपने को सबसे हाई क्वालिफिकेशन का नाज रखते हैं, 2-3 उदाहरण उनके ही बता देना चाहता हूं। जिस समय कोविड की वेव चरम के ऊपर थी, तब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता। मान्यवर, कोविड वैक्सीन तो छोड़िए, पैरासीटामोल जैसी जो दवा भी अमेरिका ने उस समय हमसे मंगाई थी। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह सकता है कि वो चूरन की तरह फार्मूला सबको दे दिया जाए। तो कभी कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर फिल्म क्यों नहीं लाद दी जाती है। अरे भाई, वो सरकार का अधिकार का क्षेत्र नहीं है। और फिर इतना ही नहीं, सिंगापुर में इनको बुलाया, इनविटेशन आता मेयर्स कॉन्फ्रेंस का, तो मुख्यमंत्री होते हुए जाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से कम इनको थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। और एक पढ़ने लिखने पे एक तथ्य मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इनकी तारीफ निकली थी तो इनके मुंह से निकल गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, और उसमें इतनी तारीफ निकलवाना आसान नहीं है। वैसे निकलवाना शब्द निकल गया था, मगर मैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहता हूं महोदय कि न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, वो है यमुनी शिंबुन जापान का। अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार वो नहीं है, वो यूएसए टुडे। और इतना ये समझिए, इतना ही नहीं, भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, और वो भी उनसे अधिक है। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं, अरे भाई जिस अखबार का नाम लेते हैं कम से कम उनको तो पढ़ लेना चाहिए था। मैं आपको अधिक समय न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं महोदय कि इनको न पढ़ाई से मतलब है, इन्हें न पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, इन्हें तो बस कमाई से मतलब है, और वो भी ऊपर वाली कमाई से। और अंत में मैं कहना चाहता हूं सर, अंत में एक लाइन और कहना चाहता हूं कि आज सब लोग मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया, और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अंत में कि इन लोगों को आखिर में क्या प्राप्त हुआ, ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि इनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। सुखेंदु शेखर रे, श्री सुखेंदु शेखर। त्रिवेदी ने बड़े जोश के साथ और बहुत शेर शायरी के साथ उन्होंने बात की। त्रिवेदी ने शेर शायरी के साथ बहुत लंबी तकरीर की। अगर उसको उत्तर हमारे पास चतुर्वेदी है, अगर आप त्रिवेदी है तो हमारे पास चतुर्वेदी है। माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी ने कवि का काम ज्यादा किया, वकील का कम किया। कितना कवि का काम आपने किया। श्री सुखेंदु शेखर रे, 9 minutes. Thank you. I am not going to make a political speech because the matter relates to a very important bill relating to National Capital Territory of Delhi. Sir, there is no sound from this microphone.
I cannot shout. I can hear. But I cannot shout, sir. I cannot hear. There is no feedback. No feedback to my ear. Yes, some problem, sir. Go ahead, go ahead, go ahead. Sir. Some Go ahead. problem. As I have stated, that I am not going to make any political statement, but my submission shall be confined within the parameters of this bill. On 19th of May this year, the Honorable President of India promulgated the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023, which negates a Constitution bench judgment of the Supreme Court dated 11th May 2023 that brought services under GNCTD. There could be some symbolism in the ordinance being promulgated in the middle of the night, as already stated by some of my colleagues, just a few hours after the Supreme Court closed for summer vacation. But I am not on that. Meanwhile, the ordinance has been challenged in the Supreme Court, and the matter has since referred to a constitution bench. During the pendency of the matter before a constitution bench of the highest court of the land, the government has introduced this present bill to repeal the ordinance and for further amending the GNCT Act 1991. I wondered as to whether heaven would have fallen had the government waited for the outcome of the constitution bench where the ordinance is still pending. What is the urgency involved in the matter? What is the urgency? There is no whisper about the urgency in the bill or the statement which have been received just now after the introduction of the bill, that the aforesaid judgment, that is judgment dated 11th of May, posed certain challenges in the efficient administration of the government of NCT of Delhi, which needed to be addressed through appropriate legal interventions. According to me, this is a stigma on the highest forum of our judiciary, which must be deprecated by all conscious citizens of this country. Third, in the year 2021, in the matter of Madras Bar Association, the Supreme Court held inter alia, and I quote one line, "A legislation can be declared as unconstitutional if it is in violation of the principle of separation of powers, the rule of law, and Article 14 of the Constitution, that is arbitrariness." Therefore, once there is such a judgment, which was delivered in 2001, government ought to have abide by that judgment of Supreme Court, which is otherwise a requirement under the Constitution. I am coming to that later on. Third, the question is whether the Legislative Assembly of Delhi has powers over all matters in List 2, except the matters in entries 1, 2, and 18, which is public order, police, and land. In apparent defiance of the 11th May judgment, this bill seeks to amend the GNCT Act for abridgment of the powers conferred upon the GNCTD legislation by the Constitution, because the entry number 41 is sought to be taken away, is sought to be inserted through this bill, so 3 will be 4, rightly pointed out by our senior counsel, Mr. Abhishek Manu Singh Viji. Now, sir, when a constitutional bench comprising 5 judges of Supreme Court declares or interprets Article 239 AA3A of the Constitution, the same is binding upon all courts and authorities in India
in terms of Article 141 and 144 respectively. Neither Article 239A3A nor Articles 141 and 144 can be negated without a constitutional amendment. I repeat, without a constitutional amendment, this cannot be done. And if at all the government brings, subsequently will have to bring, if they wish, because this registration will be declared null and void. As a student of law, I understand. It will be done. But if the government at all in future brings a constitutional amendment bill, that will also hit by the principle of separation of powers, and federalism, which are the basic structures of the Constitution that was held by the Supreme Court right from the Keshavananda Bharati case till Minerva Mill case. Sir, this bill this bill seeks to render the GNCTD Assembly, or for that matter the Delhi government, virtually toothless and ineffective insofar as the services and service commission are concerned. Even a constitutional bill on this score shall be unconstitutional ab initio, as it will negate federalism and separation of powers already stated by me. Sir, now let me have a look at the bill once. Possibly that will be the final, because 7 minutes already elapsed. Come to part 4A. It says about provisions relating to the maintenance of democratic and administrative balance in the governance of National Capital Territory of Delhi. What a brilliant drafting. To maintain a balance, the original act came into being in 1991. We are in 2023. So for the last 33 years, there was no balance. There was no balance. That is why, all on a sudden, the Kumbhakarna has risen from the deep sleep to maintain a balance. Interestingly, the authority has been proposed to be created. Which authority? Already stated by other members. The Chief Minister, Chief Secretary, Home Secretary. Sir, please give it to me. Please give it to me. Very interesting bill. Chief Minister, Home Minister, Chief Minister, Chief Secretary, and Home Secretary. And whatever may be recommended by the Chief Minister, if it is not accepted by the two bureaucrats, then also it will be passed and the Lieutenant Governor will accept it. So, Chief Minister will be a, what should I say, what should I say, without any authority. He does not have any authority. The bureaucrat will prevail upon him. Sir, in democracy, will of the people is supreme. Vox populi, vox dei. Sabar upore manush satya tahar upore nai. Will of the people. But here, the will of the people, which has been reflected through election, the duly elected, constitutionally elected government, his Chief Minister has no power. The bureaucrat will overrule the recommendations of the Chief Minister. This is a draconian bill. This is against all spirit of the Constitution, and every citizen of this country should oppose this bill in the manner, not only inside Parliament, even outside Parliament, voice is to be raised. Sir, finally, with your kind permission, I would like to quote from judgment online of former Chief Justice Y.V. Chandrachud, the father of the present Honorable Chief Justice of India. Quote, Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basic essential features. Here is a case where the basic features are being destroyed. And sir, according to me, according to my party, All India Trinamool Congress, this government seeks to insert entry 41 of the list 2 into Article 239A3A, thereby expanding the scope of accepted matters
sir, the bill virtually stands against the heaven of freedom into which Rabindranath Tagore wanted his country to awake, as the bill reflects the abyss of unrestricted power to ensure emergence of a banana republic. Thank you, sir. Shri Tiruchi Shiva, 14 minutes. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, I stand to oppose this bill very strongly, for it infringes upon the basic structure of doctrine by crushing the federalism which is the soul of Indian democracy. Sir, this attempt of this government is yet another a strike on federalism. It is unwarranted, untenable, it is undemocratic, unjustifiable, unfederal, and unconstitutional. Sir, why I am saying all these things? Unwarranted. Sir, after 1991, when the Delhi was granted special status, BJP came to power. Mr. Madanlal Khurana and later Sahib Singh Verma, who were the chief ministers, they insisted for full statehood for Delhi. And later, sir, in 2003, August of 2003, the NDA one government introduced a bill insisting for full statehood for Delhi. So when they are ruling, they want full statehood for Delhi. Then what necessity for this ordinance or this bill, sir? After 2015, Aam Aadmi won the election with a significant margin. Immediately after that, the union government issued a notification that services will come under the control of the union government. And that sparked a legal battle, sir, which lasted for 8 years. And recently, the Supreme Court in 2018 and 2023 Constitutional Bench has given a unanimous judgment in favor of the Delhi government that they have got every power. Now this bill is attempting to overturn the Supreme Court judgment and override the powers of the state government. Sir, we should just look at it in this manner, sir. So whenever they are in double standard, when they are in power, they want something. It is intolerance, to say very shortly, if an opposition party is ruling, they will be disturbed by the governors. If it is a union territory, the lieutenant governor will take all the powers and will not allow the state government to function. So in this situation, where is democracy? Sir, our constitution, as you know very well, sir, has given a structure of federalism, which gives the very importance to the regional aspirations can be represented and realized by state governments, and which cannot be done by a centralized union government. Sir, it has also established a mechanism of triple chain accountability. The people hold the legislators accountable, the legislature holds the government accountable, and the government holds the officers accountable. But now, the officers are not under the control of the government of union territory. So what's the use of being there? So this triple chain accountability is broken by way of this attempt. This not only I say here, sir, the Supreme Court has also emphasized very strongly. It should not be severed on any account. Sir, now coming detail into the bill. Why we are opposing? What are the contentious issues? What are the reservations we have? All others have spoken, sir, but we have to enlighten it. Number one, this bill attempts to establish a National Capital Civil Services Authority. As everyone said, it will consist of 3 members under the chairmanship of the Chief Minister and 2 officers, Home Secretary and Chief Secretary. Who are they? Appointed by the Union government. Obviously, one can understand what will be the outcome. The quorum is 2 and the majority will be the decision. Sir, I have moved an amendment which even it may be passed. I think with hope. If at all it is passed, even it won't be of use, sir. Because even if the authority with a majority gives a suggestion to the Lieutenant Governor, he can reject it. So ultimately it goes there. The authority
becomes redundant and the chief ministership becomes lesser than a rubber stamp. We are very sorry to say these words. A chief minister elected by the government has to fulfill the obligations by the mandate is been given to him. But whereas he is not able to have control. Sir, Delhi has been the nucleus of power from Mughals to British. Can anyone say any ruler has ruled without control on their officers, whether he or she? But now this bill paves the way. Sir, where we are heading towards? The government which is accountable to the people, to the legislature, and the government which can hold the officers accountable, now they don't have any control over the officers. Number two, sir, the Council of Ministers, the Cabinet. Earlier, sir, the notes which are prepared by the ministers. And it will be taken over there. And after the decision, it will be forwarded to the Lieutenant Governor. It is vetted by the Law Department. Now that the Secretary will overlook the Minister, and overall, the Cabinet, which is the Council of Ministers, if they take a decision, the Chief Secretary will come and say, it doesn't come under law or under the rules of procedure, and he will take it to the Lieutenant Governor who can alter it or reject it. So first, the Chief Ministership became redundant. Now the Council of Ministers become redundant. Number three, sir, any minister, if he takes any decision, the Secretary is the supreme. If the Secretary doesn't agree with the decision of the minister concerned, without the consent of the minister, he can take it directly to the Chief Secretary or to the Lieutenant Governor. So the ministership also becomes redundant. Number four, sir, Delhi is also like other states run by some 50 around statutory authorities, corporations and commissions. These include industry, tourism, everything. It comes under even transport, water, sewerage, women rights, child rights and all. All these positions, the chairpersons and the members were earlier nominated by the government, by the Lieutenant Governor on the advice of the government. But now, sir, hereafter, these positions will be appointed only by the Lieutenant Governor. The government has to sit with folded hands. Yes. Sir, one by one, just though the authority is established, the authority has no say, and even in the authority, the Chief Minister has no say. Number two, the Council of Ministers, the Cabinet becomes redundant, the Minister becomes redundant. Number four, sir, all the commissions, all the corporations, all the statutory authorities will be appointed by the Lieutenant Governor, and then proroguing and summoning also comes to the power of the Lieutenant Governor. Earlier, sir, the Council of Ministers will decide a date and they will represent to the Lieutenant Governor and he will summon. Now that Lieutenant Governor can do. So the government cannot, if at all an urgent issue has to be resolved, if the assembly has to be convened, the Chief Minister or the Council of Ministers has no power. Sir, kindly tell us. We are not just accusing the government or pointing fingers, what you are doing is wrong, but kindly explain to us why all these things happen. A government which has been elected by the people, they have to cater to the needs of the people. They only know the local people's aspirations. That's why we are pleading for state autonomy. When the voice for decentralization is going up and up, this government is traveling on the opposite direction. Powers are centralized in the union government again and again. What will happen? It will get broken. Sir, India, which is known for federalism, sir, everything is under threat now. Secularism is under threat now. Especially, sir, we are very much concerned that this bill again strikes at the very root of federalism. Sir, let me quote Dr. Baba Saheb Ambedkar. Ambedkar, in November 4, 1948, this bill disregards the constitutional morality. That's what I am trying to drive at. Dr. Ambedkar on November 4, 1948 in the Constituent Assembly, quote, while everybody recognizes the diffusion of constitutional morality for the peaceful working of a democratic constitution, there are two things interconnected with it, which are not
unfortunately generally recognized. One is that the form of administration has a connection with the form of the Constitution. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution. Sir, underscore. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution without changing its form by merely changing the form of administration and to make it inconsistent and opposed to the spirit of the Constitution. Sir, it is not a statement by Tiruchi Siva. It is Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly. And emphasizing that, the Supreme Court in its judgment in 2018 refers to the Constitution in these words, quote, "Constitutional morality is that fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike, as experience has shown that unbridled power without any checks and balances would result in a despotic and tyrannical situation which is antithetical to the very idea of democracy." Sir, what is going on now? Unbridled powers without any checks. Everything is taken over. Sir, we are told now and then, again and again, many a time, that many of the acts that has been enacted during this regime, sir, are transgressing into the powers of the state governments. It is taking away the powers of the state governments. All are heaped with the union government. So this is what the Supreme Court has also said, unbridled power with no checks and balances. Same thing, Dr. Ambedkar has also told, constitutional morality, this disregards constitutional morality. Sir, I earnestly appeal to my fellow colleagues of some political parties who may support the government's decision. My earnest appeal, as Mr. Singhvi told, sir, we are living in an area where there are 100 huts, all thatched roofs. If the last house is burning, the person sleeping in the first house will not sleep. He will go, run and put out the fire with the fire brigade. It is not only to help him, sir, but to safeguard his own self. If it is not put out, that fire will slowly come and at last it will affect them. So it has to be thought over. Sir, all these years, we have preserved our independence. We have preserved our democracy. Sir, often you used to say, sir, very proudly, India, the largest democracy in the world. Yes, sir. The largest democracy now is in peril. Why so many charges against the state governments? No state government is able to function on its own. It's not able to enact a law. If something is passed in an assembly, it is not endorsed by the governor. So they are not able to serve the people's needs. Only they know what the people need. That's why the state governments have been formed. But now that either the union government encourages or through the governor, it is trying to obstruct. Sir, all these things have to be kept in mind. Again, I say, all the reservations and contentions we have raised are not with a partisan mood, sir, but it has to be justified. Why all these things have been done? Why all the powers have been taken from a state government? Why the chief ministership has been reduced to the level of, to say the word, rubber stamp, and more or less, everything is redundant, sir. What is the big idea of getting along? Sir, let me conclude, sir. I've already told them once, now that, not in any other manner, in the democratic process, one day they will be out of power. And every day they will be lamenting and regretting for all those laws they have enacted. It is not far behind, sir. 2024, the India Alliance will win. We will be there. And, sir, we will restore Delhi its autonomy. Thank you very much. Let me go on. Don't be too quick. It is not too quick for me. Shri Raghav Chadda, 14 minutes. 1-4. सर, आज मैं सिर्फ 2 करोड़ दिल्ली वासियों की ओर से नहीं,
बल्कि 135 करोड़ भारतवासियों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनके पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। सर, इसमें दिल्ली बिल का सार है। सर, हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला, कि यह बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, यह कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा, कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। सर, पहला, राजनीतिक धोखा। यह कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। लगभग 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। 1977 में जब 3rd मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते करते ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो में बीजेपी का लाया हूं। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं, ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी ऑफ दिल्ली। यानी कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे। यहां तक कि जब 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, उससे भी ना पर्याप्त मानते हुए लाल कृष्ण अडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी, सबने बयान दर्ज कराए कि यह भी दिल्ली के साथ न्याय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। सर, 1999 में फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टो है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 31, वी विल गिव फुल स्टेटहुड टू दिल्ली। सर, इन लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई, न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण अडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। यह बिल अडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। यहां भी बात खत्म नहीं होती सर। इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर, ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण अडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने
पंडित नेहरू ने ये बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आज इस मंच से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संवैधानिक पाप है। सर, पहली चीज, ये अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है, आर्टिकल 123 जो संविधान का देता है। संविधान ये कहता है, और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? दूसरा सुप्रीम कोर्ट की दूसरा बिंदु, यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर 5 जजों के संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को बदल के आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते। आपको जो ऑर्डर जारी करना है करो, हम चंद दिनों के अंदर ऑर्डिनेंस लाकर उस फैसले को बदल देंगे। दे हैव चैलेंज्ड द मैजेस्टी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सर, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो ऑर्डिनेंस लाने की जो एक फेटिश इस सरकार ने देखी, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे वो फार्म बिल हो, चाहे ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन हो, जो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से इन्होंने करी थी, इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था। सर, थर्ड बिंदु कि कैसे ये बिल संघीय ढांचे को एरोड करता है। हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का 2023 का 2018 का संवैधानिक पीठ का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक यूनिक फेडरल आइडेंटिटी है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, और भारत का संविधान जो हमें संघीय ढांचा देता है, जो शक्तियां देता है, उन शक्तियों को एनक्रोच करने का काम यह सरकार करती है, हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीनकर। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो एक वाक्य पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द मेजॉरिटी इन द 2018 कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच हेल्ड that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state, the concept of federalism is applicable to Delhi. हम पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संघीय ढांचे के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली को मिलता है। उसके बाद सर, इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। आज बिना संवैधानिक संशोधन लाए संविधान को बदल दिया, मात्र एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जो आज तक शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर, इसके बाद यह बिल पार्लियामेंट्री अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी को। भारत का संविधान कहता है सर कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिलके लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। इसमें से परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि अफसरशाही को छीनकर ये पूरी तरीके से कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का प्रिंसिपल, जिसपे सरकारें चलती हैं इस देश में, उसे ध्वस्त करता है। और आखिरी बिंदु, संवैधानिक अपराध का, ये ट्रिपल चेन ऑफ अथॉरिटी को तार तार करता है सर। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि अफसरशाही की जवाबदेही मंत्री को, मंत्री की जवाबदेही लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर की जवाबदेही जनता को। इसमें से अगर आप अफसरशाही हटा देते हो तो फिर जवाबदेही की जो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ध्वस्त हो जाती है। तो ये काम करके संवैधानिक अपराध एक प्रकार से सरकार ने किया है। सर, मेरा आखिरी भाग, ये कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाराकिरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव गतिरोध पैदा करता है। ये कहता है सिर्फ उपराज्यपाल ही ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे एक समिति के माध्यम से, यानी कि अफसर अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, मंत्रियों की नहीं सुनेगा,
अगर अब दिल्ली में किसी के घर में बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, तो वो उपराज्यपाल के पास जाएगा, अपने मंत्री मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा। क्या लोग जानते हैं उपराज्यपाल कहां रहता है? उपराज्यपाल कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ा, उपराज्यपाल ने कौन सा चुनाव जीता? लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी हुई सरकार से निकालकर उपराज्यपाल को देता है। ये आगे कहता है सर ये बिल कि हम एलजी को सोल डिस्क्रिशन देते हैं, स्वयं के विवेक से फैसले लेने की तमाम शक्तियां। आज तक उपराज्यपाल और गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से बाध्य थे, लेकिन यह बिल उपराज्यपाल को सुपरसीडिंग पावर देता है। आगे सर ये बिल जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें एक जुडिशियल अथॉरिटी बना देता है। यह कहता है अफसरशाही तय करेगी कि मंत्री का फैसला सही है कि मंत्री का फैसला गलत है, और अगर अफसर को मंत्री का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंत्री का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं। और सर यह बिल अथॉरिटी, कमीशंस और कॉरपोरेशंस बनाने की, तमाम गठन करने की, नियुक्ति करने की शक्तियां सारी की सारी केंद्र सरकार को दे देता है, यानी कि सरकार की चाबी एक प्रकार से केंद्र सरकार को हाथ में पकड़ा देता है। सर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। सर मैं आज अपने साथी जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सर मैंने अपनी बात शुरू करी थी महाभारत के एक अंश से, मैं समाप्त भी महाभारत के एक अंश से करूंगा। सर बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर ने शंखनाद करने से पहले एक घोषणा करी और कहा कि ये धर्म की लड़ाई है। मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा हैं, अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरे दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं, उनकी ओर से युद्ध करें। और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युधिष्ठिर के साथ है, पांडवों के साथ है, तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आइए, मैं बाहें फैलाकर आपका स्वागत करूंगा। उस समय कौरवों का एक भाई युयुत्सु कौरव सेना छोड़कर पांडवों की ओर आया और पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। मैं उसी बात का जिक्र करते हुए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां ज्यादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हितों की, अधिकारों की रक्षा करने की। मैं मांग करता हूं आज आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बिल को हराइए। आज ये इतना असंवैधानिक और गैर कानूनी बिल अगर ये सफल हो गया तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुनाव ही ना कराएं, चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सस्मित पात्रा, Thank you. 12 minutes. Honorable Chairman, sir, I rise to speak on behalf of the Biju Janata Dal. Sir, speaking on this bill in the Lok Sabha, our party's senior member of parliament and leader of the BJD parliamentary party in Lok Sabha, Shri Pinaki Mishra ji has already made our stand very clear and has made it very eloquently and succinctly expressed that the Biju Janata Dal's equidistant stand from the BJP and the Congress and the reasons for the same and the fact that BJP is our principal opposition party. I reiterate and place on record that we are equidistant from the BJP and the Congress, and our principal opposition party in Odisha is the BJP. Our stand today does not change anything in that regard. Sir, BJD is in favor of this bill because it supports
the constitutional standpoint of this bill and the Parliament's power to enact legislations and the Parliament's legislative competence to such matters. Sir, I need your protection, sir. You can imagine the kind of ruckus being made. I should be heard. 4.5 crore people in Odisha want to hear, whether people here want to hear or not. Honorable members, please keep calm. Thank you, sir. You see, Sir, in July 4th, 2018, the Supreme Court judgment in its civil appeal has very clearly said on para 277, और ये मैं सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रेफर कर रहा हूं, 2018 जुलाई 4, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? Supreme Court in the matter of civil appeal 2357 says, however, if the Parliament makes laws in respect of certain subjects falling in the state list or the concurrent list, this is referring to Delhi, the executive action of the state must conform to the law made by the Parliament. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा नहीं है. तो ये पहला विषय है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूं. Why the Parliament has the legislative competence to bring something here. Second, 11th May 2023, sir, Supreme Court का judgment आता है in civil appeal again 2357 by Justice Chandrachud, Justice M.R. Shah, Justice Krishna Murari, Justice Hima Kohli and Justice Narasimha. Para 164 को मैं रेफर करना चाहता हूं, subsection C. What does the judgment say? In addition to the entries in list 1, Parliament has legislative competence, and I repeat, has the legislative competence over all matters in list 2 and list 3 in relation to NCTD, National Capital Territory of Delhi. तो ये दूसरा विषय है. 2018 के बारे में मैंने बोला. 11 मई 2023 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको मैंने उल्लेख किया. अब मैं तीसरे विषय पर आता हूं. जुलाई 20, 2023, अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट आता है इन रिट पिटीशन 678 ऑफ 2023. ये आता है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा का. एंड ऑन पेज 10, पैरा 17, ये जजमेंट क्या कहता है आखिरी पैराग्राफ में. और ये क्या विषय था मान्यवर? ये विषय था कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस जो है उसको जो है आप स्टे प्रोवाइड करें, सरकार को बोले कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस को वो कहीं ना कहीं से इंप्लीमेंट ना करें. दैट वाज द प्रेयर. तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और आखिरी लाइन में सुप्रीम कोर्ट सेज, एंड आई कोट, IA number 13050 of 2023 seeking a stay of the NCT ordinance is dismissed. तो स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ये जो प्रेयर किया है एनसीटी ऑर्डिनेंस के बारे में उसको डिसमिस कर देता है. तो ये जो बार बार कहा जाता है that the legislative power does not exist because the matter is pending, that is on a separate matter, not on the matter dealing with July 20th 2023. तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जो मैटर गया है वो मैटर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास मैटर दिल्ली एनसीटी का नहीं गया है. क्या है? What are the contours of power of Parliament to enact a law under Article 239AA7, and whether the Parliament in the exercise of its powers under 239AA7 can abrogate the constitutional provisions of governance for NCT. So Delhi Ordinance Bill specifically is not being placed before the Constitution bench. The points of law, जो दो points of law है, वो place किया गया है. ये स्पष्टता होनी चाहिए. Then I come to Constitution of India. संविधान पे आता हूँ. 2018 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने बोला. 11 मई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला. 20 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला. अब मैं संविधान पे आता हूँ. संविधान धारा आर्टिकल 239AA सब क्लॉज 3B क्या कहता है मान्यवर? Nothing in subclause A shall derogate from the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter of a union territory or a part thereof. तो पार्लियामेंट को पूर्ण अधिकार मिलता है कि अगर आप ऐसी कोई भी लॉज आती हैं तो powers of the Parliament cannot be derogated, cannot be declined, cannot be diluted, cannot be taken away from the perspective of the powers to undertake their activity on any matter of a union territory. संविधान कहता है. अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या कहेगा? That's a secondary issue. Now we come to 239AA, 7A and 7B of the Constitution. मैं आखिरी पड़ाव पे हूं. अब कहा जाता है कि whether the Parliament has the legislative competence. बीजू जनता दल पार्लियामेंट के साथ है. बीजू जनता दल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है.
Biju Janata Dal that the parliament has the legislative competence to undertake such an activity, uske saath hai. So what does the constitution say? 239AA article, clause 7A and 7B. What does 7A say, sir? 7A कहता है, Parliament may, by law, make provisions for giving effect to or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters thereinto or consequential thereto. इसका मतलब क्या है? सारांश बता देता हूं कि पार्लियामेंट के पास तमाम वो पावर्स हैं जिससे कि 239AA जो कि दिल्ली एनसीटी के बारे में है उस पर अपने रूल्स, अपने लॉज कर सकता है. 7B, any such law as is referred to subclause A shall not be deemed to be an amendment of this constitution. तो जो बात आती है बार बार constitution amendment की, clause 7B बहुत clearly संविधान का बताता है that this is not any changes in 239AA, 7A and 7B के तहत is not considered as a constitution amendment. It can be undertaken. माननीय, अब मैं और 2-3 मिनट लूंगा और मैं खत्म करूंगा. So sir, this is a constitutional issue. This is a legislative issue. This is not a political one. This is an issue which is before the power of the parliament to legislate and its legislative competence. It's not about parties or governments. Sir, किसी ने कहा था, एक बहुत बड़े महापुरुष ने, एक बहुत बड़े लीडर ने, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, संविधान रहना चाहिए, इस देश का संविधान, इस देश की सोच रहनी चाहिए. Sir, with these words, and the matter is pending before the court, we will leave it at that. Let the constitution bench come back to it, but that does not take away the legislative competence of the parliament. We will continue our equidistant policy from both the BJP and the Congress, and Biju Janata Dal, led by our leader and Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, will continue to support the constitutional position and the parliament's power to enact this piece of legislation. Thank you. Jai Hind. Bande Utkal. Thank you. Manya V. Vijay Sai Reddy. Reddy ji, you have 12 minutes. Please let him speak, please. Thank you. Please. Thank you, Deputy Chairman, sir. No comments while sitting on chair. Sir, I, on behalf of my party and my Chief Minister, Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, raised to support this bill. And I need to respond in this regard while putting forth my arguments, observations. I will have to respond Manu Singhvi ji and also Raghav Chadda ji, who is not seen here. No. Please, no. Sir, the crux of the entire bill has to be understood in the light of the provisions of Article 239AA, as my colleague has pointed out, sir. Sir, 239AA clause 3 has got 3 subclauses. Subclause A, subclause B, subclause C. Sir, subclause A states, Delhi legislature has got the power to make the laws. In so far as the issues are concerned, except public order, law and police. Sir, subclause B states that Parliament shall have the power to make the laws with respect to any matter of our Delhi, any matter. Sir, the subclause C states that in the event of clash between the Delhi government and the Parliament, the law made by the Parliament shall prevail, and the law made by the Delhi government will become null and void. This is the Constitution clearly provides Parliament an upper hand when it comes to the making laws for Delhi. Therefore, the argument put forth by AAP and also the learned senior advocate Manu Singhvi ji observations are not will not stand before the law, sir. Then coming to the Supreme Court judgment, the second issue which I am dealing with, sir. Sir, on the issue, please. On the issue whether the Parliament can make the law on services in Delhi, that is the issue. The Supreme Court has categorically stated, quote, in verbatim, the power of Parliament to enact the law
granting government executive power over services is not in contention. It is now a settled position of law. So therefore, Supreme Court has not stated anything against the government or said any Parliament is not barred. Parliament is barred in making the rules in respect of services, sir. The second point, sir, hence on the issue whether Parliament can make the law to limit the executive power of Delhi government over services. In this regard, the Supreme Court has said, quote, sir, the executive power of Delhi government shall be subject to and limited to the executive power conferred upon by the central government, by the constitution or law made by the Parliament, sir. So Supreme Court is very clear and very categorical, sir. The cumulative reading of these two observations of the Apex Court supports this bill. Therefore, YSR Congress Party supports this bill, sir. Sir, even the Supreme Court has noted in verbatim, sir, quote, the purpose of the Article 239 AA is to confer expanded legislative competence upon the Parliament when it comes to the Delhi, since it is a capital of the country and therefore must be dealt with different considerations. This is what the Supreme Court judgment is, sir. Therefore, the arguments that have been put forth by Honorable Senior Advocate does not stand for judicial scrutiny, sir. Sir, I'll have to oppose the. I'll have to counter Chaddaji, Raghav Chaddaji, sir. There has been a lot of controversy surrounding the bill, sir. This controversy has been created only by Congress Party, AAP and other supporting parties, that is IA. And it is an attempt to mislead the public for their own selfish political gain, sir. Sir, Deputy Chairman, sir, please listen to me, sir. In fact, the very member of this August House, my friend Raghav Chadda ji has pointed out, sir, he has said, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में यहाँ हमारा अकेला मकान तोड़े ही हैं. That is what he has said. Sir, I am responding to Raghav Chadda ji. He has also said that certain non-NDA parties are under compulsion and coercion to support this bill. That is what he has stated. Please stop it. ED may come to you also. Don't. Please. Sir, Please, no. Sir, I would like to. No crosstalk, please. I would like to remind Raghav Chadda ji that the fire doesn't start just like that, sir. Fire doesn't start without fuel. It is Aam Aadmi Party which has put the fuel. That is the reason why whole confusion and the entire state of affairs which are prevailing now, sir. I would only advise the honorable member Raghav Chadda ji not to play with the fire, what he has referred to. Not to play with the fire, because the very fire which he has put forth may engulf, he himself may get engulfed in that, sir. Sir, it is very clear that if this bill is passed, the Aam Aadmi Party, that is the official name, I have no hesitation to say that it is absolutely anarchy party, AAP. And to put it in Hindi, sir. Sir, no, I will not yield to you. No, sir. Nothing is wrong. The record will be checked. Let them get an opportunity. Whenever they get an opportunity, they can speak. Please take it. I will not yield, sir. He is not yielding. I am not yielding, sir. Please continue. I will put one step forward and say, Tana Shahi Party. That is what they are doing now. Tana Shahi Party, Anarchy Party. What they are doing is that nothing but an anarchy, sir. Please take Can no longer Delhi for selfish and ulterior motives.
please. Sir, I have to bring to your kind notice. I have to bring to your kind notice one of the observations made by one of their founder members, sir. Sir, one of the founder members of Aam Aadmi Party, famous personality, has categorically said, he was poet and he was very popular leader also, Kumar Vishwas. What did he say? What did he say? Sir, he has alleged, he has made an allegation that the convener of the party, that is Aam Aadmi Party, has supported separatists and collected funds from the separatists for the elections. That is what the state of affairs, sir. Sir, it is not me. It is not me who is saying this. It is the founder member of their party. It is the founder member of their party who has said it. Please, you know, Mani, please. Raghav, take your Raghav Chadda ji, take your chair, I'll come to you. please. There are some more issues. Mani.